Now we have the second video for haloalkane and haloarenes for chapter number 6, class 12. And here we do some iupac naming of haloalkanes. Here the very simplest haloalkane having one carbon. So how many root word of the carbon? It is one. For one root word carbon, it is what the name? That is meth. Clear? For the methane, and their derivative is chlorine. How many carbon? One. First we write according to the iupac. First we write what the prefix. Okay. So we have first write one, first position. It is a chloro, and what the root word? Root word for the meth. Meth for methane for one carbon. So here the name is 1-chloro methane. So this is the simplest haloalkane name. After that we have add 2 and 3 halogens, and after that we have named this. Here the CH3 Cl, now CH3 CH2, now we have replaced by the propane. Okay. How many carbon it had? 2 carbon. For the 2 carbon, it is called the root word eth, that is coming from ethane, and this is also monoderivative. Why? Because only one halogen is present. And what the name of this element? We have non-metal, that is bromine, and in the prefix we have used a bromo word for it. Clear? So it is attached on the first carbon. So we have write what the name of this compound? 1-bromo ethane. Here, this is the iupac of this compound. Okay. Now again, clear? When you see on the whiteboard, now there is 2 carbon, first and second, and at the both position having bromine, the first carbon and second. Okay. It is any order we were taken, first from the clear, any right hand side or the left hand side. Clear? Because only 2 carbon, so there is no change in their iupac naming. So the first carbon is the bromine and second carbon is also bromine. This position is known as vicinal position, when the same hydrogens present at first and second carbon. So we have say vis dibromoethane also, but for the iupac we have write their locate position first, and their locate position is first carbon and second carbon. So we have write here first, after that comma, again then hyphen. Okay, 1, 2. They are coming 2 times at the same halogen. So we have write di. Again it is bromo. For the 2 carbon alkane, it is ethane. This is the iupac naming of this compound, 1, 2 dibromoethane. That clear? Now again CH3 CH2 CH2 and again a bromine. First count the root word, and the numbering is starting from the that carbon where which having less number, which we are giving less number of locates, that means halogens, than the functional group or multiple bond. We are giving the less number first functional group, and if the functional group is not present, we giving the first number to the multiple bond, either double bond or triple bond, and after that we are coming to the subsequent, that is form, that is halogens and side chain. Clear? So this is our preference. We have the halogen present, but we have count first carbon, second and third. So what the name of this compound? That is 1-bromo and 3 carbon, and what the root word for 3 carbon? That is prop, and it is saturated. So it say 1-bromo and 3 carbon alkane, that is propane. Okay. Now if think there is a multiple bond is also present, for example CH2 double bond, and here now the chlorine. So how we have count? So we have count, this is the first carbon and this is the second carbon. Okay. So here the double bond also having getting first carbon and the substituent. So this is the more correct.
Okay, what we have right, it is 1 chloro. At there the first carbon having double bond, 2 carbon root word, that is at, clear, and the double bond, okay, what the suffix we have used in. So what we have right, how to write the name, that is 1 chloro at, yeah, ethylene, that's also correct. Okay, and what the common name, the common name is phenyl chloride. What the common name, the common name is phenyl chloride. Why? Because we should have also know that some common name, yeah, because it is used in mostly in the organic chemistry. Okay, so how we have write this name, simply, yeah, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा हुआ था, एक रूट वर्ड, ठीक है, एक ही कार्बन का रूट वर्ड 1, दैट इज मैथ से आएगा, मीथेन से। इसका नाम सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स की लोकेंट पोजीशन लिखेंगे 1 क्लोरो मीथेन। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 कार्बन है हमारे पास, स्टार्टिंग हम नंबरिंग हमेशा प्रेफरेंस हमारा है सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है, फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है मल्टीपल बॉन्ड, लास्ट में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट, दैट मीन्स एंड साइड चेन आती है। तो यहाँ पे नंबरिंग इस साइड से करेंगे, दैट्स द करेक्ट IUPAC नेम, एंड दैट इज फर्स्ट कार्बन 1 ब्रोमो, व्हाई, बिकॉज इज द ब्रोमीन and we have used the name of the substituent, that is bromo, and the 2 root words that is coming from ethane. Again here they are having 2 carbon, ठीक है, either you are numbering, इसी तरफ से numbering कर लीजिए, right hand side left hand side, तो इसमें कोई भी variation नहीं आएगा nomenclature में। Okay, so first we have put their locate position, they are coming from first and second carbon, how many times they will coming, 2 times, 2 बार आते हैं, so डाई वर्ड यूज करते हैं, कौन है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमो इथेन। फिर इसे हम विसाइनल पोजीशन भी कहते हैं, व्हाई, बिकॉज द सेम हैलोजेंस कमिंग एट दिस, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन, अल्फा एंड बीटा कार्बन, क्लियर, सो दे आर नोन एज दिस डाई ब्रोमो इथेन आल्सो। ओके, तो दिस पोजीशन है, एंड हियर यहाँ पे देखें 3 कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन का रूट वर्ड होता है प्रोप, दैट मींस कमिंग फ्रॉम प्रोपेन, एंड वी हैव गिविंग द नंबरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम, एंड व्हाट द नेम, 1 ब्रोमो प्रोपेन। सेम फॉर द डबल बॉन्ड इज कमिंग हियर, so we have preference the first carbon here, they will take both position, that is chlorine and double bond, and what the name, that is 1 chloro, and the 2 carbon root word, that is ethene. Is that clear? Okay, I hope so you will understand this, clear? Okay, now again here when the bulky groups are arranged here, okay, how you have identified this, that is for isopropyl. How you identify the isopropyl? This is isopropyl group, CH3 CH, 1 valence C3, again CH3, and how we write in the condensed form, we have write in the condensed form, that is CH3 whole twice CH, 1 valence C3, clear? So this group is called isopropyl group, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, isopropyl, clear? Okay, मिडिल कार्बन की एक वैलेंसी हमारी फ्री होती है, CH3 CH CH3, कंडेंस फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, CH3 का होल ट्वाइस CH, एक वैलेंसी फ्री कर देते हैं। अब यहाँ हम कुछ भी लगा सकते हैं, क्लियर? यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम कॉमन नेम बोल रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, क्लियर? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये। अब यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे, इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्लियर? यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया, ये इसका कंडेंस फॉर्म है, ये भी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्लियर? तो ग्रुप आपको याद रखना है, ठीक, ये भी ग्रुप आपका आइसोप्रोपाइल है, ठीक है? यहाँ पे हमने ब्रोमीन लगा दिया, क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया, हो गया, क्लियर? इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। यानी ग्रुप आपको याद रखते हैं, आइसोप्रोपाइल क्या होता है, आइसोप्रोपाइल हमारा CH3 CH CH3, एक वैलेंसी मिडिल कार्बन की हमारी क्या होती है, फ्री होती है। हम जानते हैं कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है, 4 वैलेंसी उसकी होती है, तो यहाँ पे 3 ने बॉन्ड बनाया, एक वैलेंसी इसकी फ्री है, इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया। कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेम आपको बस याद होना चाहिए,
कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखते हैं CH3 का होल ट्वाइस, ये एक वैलेंसी फ्री, और यहाँ पे लगा देंगे ब्रोमीन, ये हो गया हमारा फिर से आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, ये ग्रुप हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल का। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट, प्रॉब्लम आती है हमारे पास टर्सरी वाले ग्रुप को पहचानने में। ठीक है, टर्सरी वाले ग्रुप को कैसे पहचानते हैं, तो ध्यान से देखिए, कार्बन में क्या होता है हमारा टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा CH3 ग्रुप क्या होता है, मिथाइल, सबको पता है जिसने भी थोड़ी बहुत बार करेंगे की है। CH3 ग्रुप हमारा क्या होता है, मिथाइल होता है, और CH3 CH2 सिंगल वैलेंसी फ्री, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ये हमारा इथाइल है, ऐसे प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल। ठीक है, यानी CH3 लिखा हो तो मिथाइल, CH2 ठीक है, H5 लिखा हो इथाइल, या फिर हम कह सकते हैं CH3 CH2 एक वैलेंसी फ्री। क्लियर? अब बात करते हैं टर्सरी ब्यूटाइल की, ये ग्रुप, इसको बिल्कुल पहचान के रखना है क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो आइसोप्रोपाइल और टर्सरी ब्यूटाइल से पूछा जाता है। क्लियर? तो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। देखिए इसकी 3 वैलेंसी पे कौन लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक वैलेंसी इसकी फ्री है हमारी। तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्सरी ब्यूटाइल, ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल है। यदि बात क्लियर? तो एक ग्रुप को पहचान लेना है, क्या है CH3, 3 CH3 है, 3 मिथाइल लगे हुए, 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रखे हैं कार्बन की, एक वैलेंसी इसकी क्या है हमारी फ्री है, ये ग्रुप हमारे पहचानना है। कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखा मिलेगा, कंडेंस फॉर्म में ऐसे मिलेगा CH3 का होल थ्राइस या होल 3 एंड द कार्बन हैविंग वन वैलेंसी फ्री, दिस इज an aberration, it is called tertiary butyl. Clear? Okay, so when we have remember this group, only simply what we have clear, so when you have see this, it is tertiary butyl. Now we have place halogen, that is chlorine. What the name, the name is tertiary butyl chloride. Okay, again it is replaced by bromine. What we are saying, ठीक है, it is say tertiary butyl bromide. This is the common name. Why? Because mostly the common name is used in your chapter. Clear? And for writing IUPAC, we have simply write how we have write this. Clear? That we come on the whiteboard. Clear? Here we have placed what? Here we have placed chlorine. Okay? We know that if we have selected the longest carbon chain, either you selected from this side 1 2 3 carbon rootward, and on the state you have, this is also 3 carbon. Clear? So here we have taken in the state. Clear? So when you see that, clear, and the middle carbon, there is the chlorine and methyl, and they are coming same position. Okay, so we have numbering 1 2 3, either you numbering from the top to bottom or bottom to top. Clear? Their IUPAC does not change, either name 1 2 3 also from the L shape, it does not change their name. Clear? So 1 2 and 3, so the second position is chlorine also, and second position is methyl. So you know the rule, when the same substituent or different substituents are coming at the same position, we have name by alphabetical order. In alphabet, who is coming first, we have name first as a prefix. So here that is methyl, here chlorine, the chlorine C is coming first, so we have put the prefix name chlorine first, and after that followed by methyl, and the position will be same, the position will be same. Now we have write what their name, here we are writing their IUPAC name, that is 2-chloro 2-methyl. Clear? Okay, and after that 3 carbon rootward, the 3 carbon rootward, that is prop, that is coming from propane, it is propane. So 2-chloro 2-methyl propane. I hope so you will understand this. Clear? How to name the haloalkane in this video. Okay, now again we are coming to the haloarenes. When what is haloarenes? Clear? You know that the benzene and the, what the molecular formula of benzene, C6H6.
that means 6 carbon, 6 hydrogen. This is known as benzene. Is that clear? Okay, and they having hexagonal structure, presence of double bond या pi bond at alternate position. Let me have see them on the blackboard. Haloarenes. Okay. So first we have discussed the structure of benzene. Benzene. What the formula? C6H6. When you show the structure, it is hexagon. Okay. Presence of pi bond in alternate position, and you know so this is the resonating structure. Why? Because the pi bond dislocate their position and the position will be dislocated from carbon. So this is the first carbon, second, third, fourth, fifth and sixth carbon. Now this is the first carbon, this is the second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth and sixth carbon. Okay. When you see this structure, this is a resonating structure, and here is the pi bond position. The pi bond position is 1, 3, 5, and here the pi bond position is 2, 4, 6. Clear? So this is the structure of benzene. Simple. Clear? This is the resonating hybrids. Clear? Why? Because they have converted each other, and the pi bond dislocated, so it is having stable structure. Okay, and this is the resonance hybrid. This is the resonance hybrid. Resonance hybrid. Okay, clear? So for our convenient, what we have here, we have what a hexagon and a continuous ring. But be careful, this ring is not continuous. Clear? This is discontinuous ring showing the what dislocation of pi bond. Clear? So we have cleared that. First, what is the benzene? The benzene is C6H6. Clear? Okay, cyclic aromatic compound, and this is the pi bond position 1, 3, 5 and 2, 4, 6. Clear? And this is the resonance hybrid structure. Okay, so this is the benzene, we have know that. Clear? And when in the benzene, for example, like in the hydrocarbon, that is methane, when one hydrogen get be removed, there the formation of a group, this alkyl group, that is methyl. Here again, okay, when a benzene, in a benzene ring, that is first we have write the formula C6H6, and there is a remove one hydrogen, they form what C6H5, and now one valency will be free. So this is the benzene, and what is this? One hydrogen can be replaced here, here, substitute here, then it is form what? This is phenyl group. Okay, so when it is a structure, be careful. Okay, this we have say benzene, but when you see this structure here, and there is one valency is free here, that means one bond in carbon here, this is the phenyl. बेसिक डिफरेंस स्टूडेंट समझिए इस चीज को. क्लियर? बेंजीन का हमारा स्ट्रक्चर जो होता है ये है हेक्सागोन. क्लियर? फॉर्मूला C6H6 होता है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और अल्टरनेट पोजीशन पर हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? ये पहली पोजीशन 1, 3, 5 यानी पहले, तीसरे और पांचवें कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. क्लियर? उसके बाद इसकी लोकेशन चेंज होती है 2, 4, 6. क्लियर? ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है, इसके लिए स्टेबल ज़्यादा होता है एरोमेटिक कंपाउंड. क्लियर? ओके. और उसके बाद ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जिसमें पाई बॉन्ड की डिस्लोकेशन दिखाई गई है जो कॉन्टिन्यूस नहीं होती. तो कॉन्टिन्यूस डिस्लोकेट होता है, बट यहाँ पे हमने डिसकॉन्टिन्यूस रिंग बना रखी है जो शो करती है कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है. क्लियर? और फॉर अपनी सुविधा के लिए, अपनी कन्वीनियंट के लिए हम इसको कंप्लीट सर्किल बना लेते हैं. क्लियर?
ओके, जैसे एल्केन से एल्काइड बनता है एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर, वैसे ही बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो ग्रुप बन जाता है हमारा फेनिल ग्रुप। इस चीज को याद रखना है, उसकी एक वैलेंसी हमारी क्या होती है, फ्री होती है, एक हाइड्रोजन कम होता है वहां पर, ठीक। और ये हमारा स्ट्रक्चर किसका होता है, बेंजीन का होता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस हमें समझना होगा हेलो एरेन्स स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो हम यहाँ समझ गए हैं बेंजीन क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर वो ग्रुप फेनिल बन जाता है, क्लियर। अब हम समझते हैं हेलो एरेन्स को, क्लियर। ठीक, जैसे हमने कहा कि बेंजीन है, अगर इसकी भी रिएक्शन हम क्या करते हैं, क्लोरीन से कराते हैं, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और वहां पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। बाई प्रोडक्ट में हम हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बना दें, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन है, ऐसे ही 6 कार्बन होंगे, 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ, कहीं भी लगे फर्स्ट कार्बन इंट्रोड्यूस होगा, 1 क्लोरो, क्या बन गया, डेरिवेटिव बेंजीन का है तो इसका नाम भी क्या होगा, बेंजीन होगा, क्लियर। तो क्लोरीन, ठीक है, बेंजीन रिएक्ट विद द क्लोरीन इन केस ऑफ सल्फाइड, दिस फॉर्मेशन ऑफ 1 क्लोरो बेंजीन, 1 क्लोरो बेंजीन। So this is haloarene, clear। When halogen attached with directly to the benzene ring with sp2 hybridized carbon. Why? Because we know that the benzene, every carbon having sp2 hybridization. This is known as what, arene. So this is the first ring, that is 1 chlorobenzene. Is that clear? Okay, again now for example, benzene ring, they having what, they having 2 chlorine, clear। So where we have numbering first and second, it does not matter, clear। Either you have write first, this is the second, either you write first here and this is the second, clear, that's correct। So very simple naming, first and second carbon having same type of chlorine, so what we name, that is 1 plus, first we write their local position 1, 2, how many times they will come, 2 times, dichloro benzene, this is the simple structure, clear, 1, 2, now we have changed their position from 1 to, now we have come to 1, 3, so don't worry, clear, we are giving all the concept here, 1 2 3। So this is the first, second, third, and somebody asks why you not coming from this side, that means from anti-clockwise, and when we are coming anti-clockwise, this is 1 2 3 4, this is the fifth position, and according to iupac it is wrong, we are giving lowest number to the functional group, multiple bond and the side chain or the substituent, so this is from the clockwise, the naming is correct, that is 1 2 and 3। So first carbon, the position of chlorine is first and third carbon. So what we have write? We have write 1, 3 2 times this coming. So we have used prefix dichloro, and is a derivative of benzene. So we have write then it is a benzene. Okay. So this is 1, 3 dichlorobenzene. Okay. Again we have write here, if there the position will be hydrogonic ring, and now position is coming from fourth carbon, this is the first and this is the fourth, so the simple name is 1, 4 dichlorobenzene, okay, and their positions, that is 1, 2, 1, 3, 1, 4, they having also very simple naming, the 1, 2 position, clear, this is called ortho position, 1 3, this is the meta position,
and 1,4 this is called para position. So we have right para dichlorobenzene also, ortho dichlorobenzene, and so this is the meta dichlorobenzene and ortho dichlorobenzene. So this is the way of naming of aromatic compound. Is that clear? Okay, that is haloarenes. Okay, simply again when they are the derivative of what, alkyne. Clear? तो आई थिंक दैट यू विल क्लियर. बहुत ही सिंपल है. क्लियर? बेंजीन जब क्लोरीन से डायरेक्ट रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, डायरेक्ट क्लोरीन इससे इसके sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से लग जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेलोएरेन्स कहते हैं. सिंपल इसकी नेम पहले कार्बन पे लगाए, क्योंकि पहले पे इसलिए लगाए क्योंकि आप पहला कोई भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसकी प्रेफरेंस हम देखते हैं. तो इसे बोलेंगे 1 क्लोरोबेंजीन. ऐसे मान लीजिए पहले और दूसरे कार्बन पे लगाए. ठीक है, इधर भी लग सकता है, इधर से होगा तो हम इधर सेकंड कार्बन की नंबरिंग करेंगे. ठीक है, एंड जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे इसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, और ज़्यादा साइड की नंबरिंग आईयूपीएसी में रॉन्ग बन जाती है. तो ये करेक्ट नंबरिंग है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे 1 से सेकंड पर. इसका नाम हो जाएगा 1,2. 2 बार आया इसलिए हमें, ठीक है, प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई. 3 बार आता है तो हम ट्राई, 4 बार टेट्रा, इससे ज़्यादा आ नहीं सकते. क्लियर? तो डाइक्लोरो हमारा बेंजीन. क्लियर? इसकी नेमिंग 1,3 हो गई थर्ड कार्बन पे. फिर से वही बात है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे, नंबरिंग ज़्यादा होगी, आईयूपीएसी रॉन्ग हो जाएगी हमारी. तो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, दैट्स करेक्ट वन. फिर यहाँ पे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर 1 और 4 पे. आप क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, सेम पोजीशन मिलेगी आपको. ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ. पहले हम लोकेंट पोजीशन रखेंगे, 2 बार आया डाई लगाएंगे. कौन आया? क्लोरीन. हाँ, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है. अगर ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमो यूज करेंगे, आयोडीन आएगा तो आयोडो यूज करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम बेंजीन से लगा हुआ है दोनों स्ट्रक्चर, तो लिख दिए बेंजीन. तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द हाउ टू राइट द IUPAC naming of haloarenes. Clear? So this is enough for this video. For the next class we have understand how you form the haloalkane and haloarene. Is that clear? Okay. So thank you. I hope that you will understand all these points.